Prime is brought to you by Misho, Amrutanjan Fruitnik Electro Plus, Dehydrate Feel Alive, TVS Jupiter 125, Zada Se Bhi Zada, Flipkart, India ka fashion capital, Everyday Spices, Leah Agarbatti, TVS Apache RTR, and Himalaya Purifying Neem Face Wash, Pimple Free, Healthy Skin ka expert. Floods, landslides throw normal life out of gear in region's biggest city, Guwahati. At least 5 people dead in nature's fury. NDRF, SDRF pressed into service. Disaster Management Minister rushing to Guwahati. Met Department warns of more rains in Guwahati in next 3 days. District Administration urges people in vulnerable areas to move to safer locations. Is Meghalaya BJP mulling to pull out of NPP-led coalition in state? Final decision to be taken in central BJP's Hyderabad meet, reveals state party chief. Trinamool Congress steps up campaign for Tripura by polls. Party National General Secretary Abhishek Banerjee arrives in state, predicts BJP downfall in 2023. Centre announces historic Agnipath scheme for recruitment in armed forces. Transformative initiative to provide youthful profile to forces. And amid outrage from Buddhist communities, Sikkim government bans release of Nepali film Kabaddi 4 in state. Hello and welcome to Northeast Live. I am Pooja and we start the bulletin with the flood updates. Situation continues to be grim in region's largest city, Guwahati, with the death toll due to floods and landslides rising to 5. Incessant rain threw normal life out of gear as people in vulnerable localities were confined to their houses, and the NDRF and SDRF called in to reach out to those in need of urgent assistance. Incessant rain last night that lasted for over 8 hours flooded major parts of Guwahati, causing innumerable inconveniences to commuters. Moreover, multiple landslides triggered by incessant rain only made things worse. So, the gateway to the northeast, Guwahati, which is home to nearly 2 million people, has been adversely affected by flash floods and landslides following incessant rainfall. And such is the situation that the district administration had to seek help from SDRF and NDRF to reach out to affected people, some of whom were marooned due to flooding in the localities. Well, taking note of the situation, the Kamrup Metropolitan District Administration also issued an advisory to citizens asking them not to venture out unless absolutely essential. The administration has also advised that occupants of residences which are prone to water logging and landslides must shift to a safer locations or contact the district administration. Meanwhile, Assam Disaster Management Minister Jogen Mohan, who is in Difu for the 2-day BJP executive meet, is rushing to Guwahati to hold a meet with ASDMA and other departments on the current situation. While talking exclusively to Northeast Live on the sidelines of the BJP meet, Jogen Mohan said that unprecedented rains since last night had led to the crisis. We have with us Assam Disaster Management Minister Mr. Jogen Mohan. देखा गया कि अभी जो परिस्थिति है गुवाहाटी में बहुत ही खराब है, लोग बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या बोलेंगे? गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड अभी आज दिन ज़्यादा हो गया, सारा रात बारिश कल से आज तक, इसीलिए बारिश हुआ, अभी थोड़ा कम है। ये हम लोग का डिपार्टमेंट अभी यहाँ में अलर्ट है
कोई किसी प्रॉब्लम नहीं होगा पब्लिक को, इसीलिए ये काम कर रहा है। ये अभी एचडी मिनिस्टर सी वो लोग सोचेगा किसे ये सोल्व करे आगे से। जितना है जीएमसी और हमारा डिपार्टमेंट ट्राई किया है इस कंट्रोल करने के लिए। अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिला हमारा। तो क्या मेजर्स लिए जा रहा है अभी, क्या एफर्ट है? मेजर्स आर टेकिंग, जीएडी मेजर्स ले रहा है अभी। ये जो पंप चल रहा है अभी, वो इतना बारिश होने से टाइम तो ऐसा हो गई। ये वही अभी पूरा कंट्रोल करेगा हम बोला। हालात और बिगड़ सकता है क्योंकि मेट डिपार्टमेंट में ये अलर्ट दिया है कि अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो। ये भाई जो अलर्ट दिया वो 2-3 दिन अभी ऐसे चलेगा। तो हम लोग फिर प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। अब आई गो टुडे टू द गवर्नमेंट गुवाहाटी, तो हाई ऑफिसर्स के साथ बात करूंगा किसी को ये कंट्रोल करना है, ये कोई प्रिवेंटिव मेजर किसी लगा है। ये पब्लिक को आने जाना, ऑफिस आने जाना, ये घूमना बहुत मुश्किल हुआ अभी टुडे ऐसा हुआ। तो अभी आप गुवाहाटी रश कर रहे हैं? गुवाहाटी आज ए मीटिंग खत्म होने के बाद हम आई विल डिस्कस विथ आवर कमिश्नर सेक्रेटरी एंड आवर सीईओ अजदमा। एक किस्सा मेजर लेना है। ये पहले बार ऐसा आज हुआ सारा गुवाहाटी पानी। लास्ट यस्टरडे तो अभी तो पूरा बारिश है अभी तो, इसलिए हुआ है। प्रॉब्लम है अभी। ठीक है। Thank you very much. That was Assam Disaster Management Minister Jogan Mohan talking exclusively to Northeast Live, reporting from Dihu. And our Chief of Bureau, Arindam Das, also caught up with Guwahati Mayor Mrigan Saranya to get an update on the steps taken to restore normalcy. Let's listen in. Mayor of Guwahati, Mr. Mrigan Saranya. Well, the people of Guwahati are passing through one of the troubled times right now. So, how is the situation? नहीं, ये बात है आप लोग का जो यहाँ का गुवाहाटी का जो बारिश का टाइम है, वो बारिश का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, 133 mm का है। इस तरह बारिश गुवाहाटी में बहुत कमती दिखाता है, लेकिन इस बार बहुत गया रात से बारिश हो रहा है। तो बारिश का कारण ये पानी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग का जो पानी जाने का रास्ता है, आउटलेट है, वो बहुत क्लियर है, पानी जा रहा है। लेकिन ज़्यादा पानी होने से ये थोड़ा वक्त लगेगा, शॉर्ट टाइम में हम लोग ये निकल जाएंगे। तो अभी तक क्या खबर आ रही है, कितने कैजुअलिटी और इंजरी हुए लैंडस्लाइड और फ्लड में? लैंडस्लाइड में थोड़ा 4-5 का ये खबर आ रहा है। हम और ऑफिशियल से बात करके कि क्या कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे। मेट डिपार्टमेंट में और भी 2 दिन तक बारिश होने की आशंका जताई है, तो क्या एफर्ट है अभी आपके तरफ से, आप लोगों की तरफ से ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए? हम लोग का जितना एफर्ट है वो तो हम लगा चुका है, लेकिन और जल्दी से पानी निकालने से हम जेसीबी जो है और जो क्लियर है, जो लोग वाटर लॉगिंग जहाँ जहाँ हुआ वो हम लोग क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पानी निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। पाम वगैरह जो है उसका से आगे और करने से हम लोग कोशिश करेंगे। और रेस्क्यू में हम लोग का जो डीसी का ऑफिस है वो कह रहा कैम्प वगैरह हो रहा है, पीने का पानी भी दे रहा है, वो खाने का सामान भी दे रहा है, वो सब करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डीसी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया कि अनलेस एंड अनटिल कोई जरूरी काम ना हो घर से ना निकले। वो बात है, ज़्यादा से बारिश होने के कारण हम पब्लिक को अलर्ट कर लेंगे। और पहाड़ में जो वासी है वो लोग भी थोड़ा सावधान से रहना चाहिए। और हम लोग का अपील है जो वो लोग नीचे आके रहे, किस कारण कोई समय में कुछ भी हो सकता है, आप लोग अलर्ट रहिए। और जो हम लोग का बांध पानी का है, अगर वो सब देख के आज हम रात में बैठ के क्या करते हैं हम लोग देखेंगे। Thank you very much. That was the mayor of Guwahati, Mr. Mrigan Saranya, talking exclusively to Northeast Live. Reporting from Difu, this is Arindam Das for Northeast Live. And earlier in the morning, a tragedy struck in a Boragaon area of Guwahati, where 4 laborers lost their lives when the structure they were taking shelter due to a landslide. Well, the deceased have been identified as Manobar Hussain, Matyur Haq, Hassanom Ali, and Amrul Haq. ৰাতি আমি গম পাইছিলো কি লেণ্ডস্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জেগাটোত, আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহি পেলাই এইখিনি আমি দেখিলো কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে। আৰু আমি গম পোৱা তাত 4জন লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি গম পাইছো শুই আছিলে ৰাতি। হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে, হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল। ৱাল ভাঙি মাটি পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে।
4জন বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ। আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু জানাত 3জন ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে আৰু এজন কোকৰাঝাৰৰ হ'ব লাগে। তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰি আছে, ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে আৰু তেওঁৰ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে। গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছোঁ। Meanwhile, a woman lost her life due to flood in Anil Nagar area of Guwahati. And well, landslides have taken a huge toll in the lives of Guwahati residents. For instance, take a look at these visuals from Kanchan Nagar in Nunmati area, where a 30-meter-long guard wall was broken in the landslide, adding to the woes of the people. Fortunately, the people residing in the area could somehow come to safety. এই ৱালখন খহি গৈছে। আমাৰ মূল পথ যেটো আমাৰ শ্মশানৰ পৰা প্ৰতীক্ষা সংযোগী যেটো মূল পথ ৰাস্তা, এটো খহি যোৱা মানে আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে বৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি ক্ষতিকাৰক হৈ পৰিছে। ক্ষতি ঠিক তেনেকে হোৱা নাই, এটি কুৱা আছে, কুৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে পোত খাই গৈছে আৰু এটি ঘৰ এটা বনাইছে, কিন্তু ঘৰটোলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৱালখন গৈ কিনে। এইটো PWD আণ্ডাৰত হৈছিলে। সাইন্টিফিকেলি তো কৰা হোৱা বুলি তেখেতসকলে কৈছিল, কিন্তু এতিয়া সাইন্টিফিকেলি যদি কৰিছেই তেতিয়াহ'লে ৱালখনটো ভাঙিব নালাগিছিলে। Likewise, similar is the scene in Kharguli area where landslides have damaged a guard wall. On the other hand, landslides have also been reported in the Nilachal hills, which brought vehicular movement to a standstill for a few hours. And parts of North Guwahati also witnessed landslides triggered by heavy rains. হয়, ৰাতি ধাৰাসাৰ বৰষুণত মাটি খহি লেবাৰ এজন যেনে তেনে বাচিছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ চব ভাগিছে। কিমান মানুহ আছে? 20জন মান আছে। 20জন ক'ৰ মানুহ? এইবিলাক বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ, জায়গা কাম কৰা। কালি ৰাতি বৰষুণ দিওঁতে গোটেই মাটি চাটি খহি আহিলে। আমি তাতে মানে কেইটামান মানুহ থাকে, ইয়াতে লেবাৰ মাটি খোতে তৎক্ষণাত বাঢ়িছোঁ আৰু বিছনাত আমি শুয়ে আছিলে লেবাৰ কেইটামান। এতিয়া জায়গা প্ৰকল্পত কাম কৰিছে, ব্ৰিজৰ কাম কৰি আছে, তেখেতলোকে আছিল। Meanwhile, there may be no respite for the residents of Guwahati, at least for the next 3 days, as far as the inclement weather is concerned. The Met Department has predicted very heavy rainfall across Guwahati till June 17th. But this comes as a warning signal at a time when major parts of the city are already reeling under floodwaters. सुबह 8:30 बजे 14 जून 2022 को जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है, देयर इज अ ईस्ट वेस्ट ट्रफ which runs from East Uttar Pradesh to Manipur across the central parts of Bihar, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Assam at mean sea level. और आने वाले समय में हम लोग 3 दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडरेट रेन इज वेरी लाइकली टू अकर at most places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. And as the floodwaters inundated major parts of Guwahati, NDRF and SDRF personnel were pressed into service for relief and rescue operations. NDRF and SDRF teams were seen in action in several parts of Guwahati, including the Rajgarh area. Our colleague Ajit Jaiswal caught up with NDRF personnel to get an update on the relief. यहाँ पर गुवाहाटी के किन किन स्थानों में एनडीआरएफ की तरफ से राहत एवं बचाव का कार्य चलाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले जो ये गुवाहाटी है, अनिल नगर है आपका राजगढ़ के पास में। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं हर साल हेवी रेन के वजह से काफी यहाँ पे फ्लड हो जाता है, जो कि एक्चुअली अर्बन फ्लड कहते हैं। और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग समथिंग कॉल किया था और यहाँ पे मेरा एक टीम है जो फास्ट एंड गुवाहाटी की टीम है, वहाँ पे एक टीम डिप्लॉय हुआ था। वो अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट समथिंग 11:30 से ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे पहले सबसे पहले पानी का जो लेवल था एटलीस्ट वेस्ट लेवल या आपका अपर वेस्ट लेवल तक पानी था। आप देख रहे हैं बगल में यहाँ पे जो भरोलो नदी है उसमें भी काफी पानी था। और रिसेंट अभी अपडेट है यहाँ पे एटलीस्ट 1 फीट पानी लोअर हो गया, लेस हो गया। जब उस समय पानी ज्यादा था उस समय काफी लोगों को खाली करना पड़ा। उस समय कुछ प्रेग्नेंट लेडी भी थी, उसको हमने ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इनका जो सिविल डिफेंस है काफी कोऑपरेट किया। और कोऑपरेट करने के बाद हम उसी को गाइड को फ्लो करते जहाँ जहाँ इमरजेंसी ज्यादा प्रायोरिटी थी उस लोकेशन में जाके इन लोगों को पहले इवैक्यूएशन किया हमने।
एक प्रेग्नेंट लेडी थी और अर्ली मॉर्निंग एक डेड बॉडी भी मिला था हम लोग को, जो भी लेडीज था 85 समथिंग होगा। उनको भी हमने वहाँ से फास्ट उनको ही प्रायोरिटी दिया, डेड बॉडी को हमने लेके गया, उनको रिलेटिव को हैंड ओवर किया, फिर आगे लेके चला गया। फिर ये कंटिन्यू चलता रहा लगभग। उसके बाद क्योंकि पानी पूरा भरा रखा है, उसमें गवर्नमेंट डीडीएमए की तरफ से काफ़ी रिलीफ आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें आपका शामिल था वाटर बोतल था, आपका पानी का बोतल, क्योंकि पानी का दिक्कत आ रही है यहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद आपने कुछ खाने का सामान, फूड आइटम भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। साथ ही साथ रात के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कार्ड पूरा यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे बिजली शायद कनेक्शन नहीं दे पाएगा, इसीलिए क्या उन्होंने डीडीएमए की तरफ से और कैंडल भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये अभी फिलहाल कंटिन्यू चल रहा है। और फिलहाल अभी क्या है, वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया, पहले सबसे ज़्यादा थे तो हम लोग को बोट को ले जाने में आसान था। अभी क्या पानी कम करने की वजह से घुटना के नीचे का लेवल पानी हो गया, जो अनिल नगर है लगभग। अनिल नगर जितना बाइलेन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 6, 7, ये हर ही जगह जाके हम लोग ने जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी थी, इनका जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, उनके साथ जाके, फील्ड ऑफिसर के साथ जाके, इनके साथ हमने गली गली में जाके सामान डिस्ट्रीब्यूट किया। वाटर बॉटल हो गया, लोगों को इवैक्यूएशन किया जिनको जरूरत है। तो हम अभी फिलहाल कांटेक्ट में हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो भी जरूरत पड़ेगा, अब तो नाइट में भी ऑपरेशन चलेगा, जब तक हम अभी रिलीफ आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ पे फिलहाल अभी। इस अभियान के दौरान आपको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे समस्या नहीं आना पड़ा, क्योंकि स्पेशली सबसे ज़्यादा कि पानी का लेवल, अगर वाटर लेवल कम होता है तो हम लोग का बोट जो ओबी में मतलब प्रोपेल नहीं कर पाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट हुए, हम चापू रोडिंग करके हम चलते हैं, वो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। इवन यहाँ पे कम्युनिकेशन कोई गैप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ लोकल का हूँ। इवन मेरा पास टीम में भी काफ़ी लोकल पीपल है, जो कम्युनिकेट करने के आसान होता है, गाइड लेने के आसान होता है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन अभी तक मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ, क्योंकि जो डीडीएमए का गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन सिटी का काफ़ी कोऑपरेटिव है, हर जगह से कोऑपरेट आ रहा है। मैंने जो भी इनको हेल्प के लिए मांग रहे हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और लगभग फिलहाल अभी अपडेट सभी लगभग खाली हो चुका है और पानी लेवल भी कम हो चुका है इसमें नगड़ी। और जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है अगले 2-3 दिनों के लिए, बारिश अगर बहुत ज्यादा होता है तो यह इलाका और स्थिति बेहद ही खराब हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए हम अभी तैयार हैं, और हमारे जो एनडीआरएफ के गुवाहाटी फास्ट एंड गुवाहाटी, यहाँ पे ऑलरेडी टीम है यहाँ पे। इवन प्री मानसून डिप्लॉय भी ऑलरेडी बाहर जा रखे हैं। इवन यहाँ पे कम से कई टीमों हैं और भी अलर्ट हो रखा है। इवन अभी जस्ट अभी अपडेट मिला है कि अगले 3-4 दिनों तक काफ़ी हैवी बारिश की संभावना बताया है, उसके लिए टीम अलर्ट पे है। और यहाँ पे आप देखते हैं जो अनिल नगर है, हर साल होता है अनिल नगर, नवीन नगर है, उसके लिए भी अलर्ट है। हम भी यहाँ पे स्टैंड बाई में थे और जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है गुवाहाटी में, से आप क्या समस्या का प्रॉब्लम हुआ, सबसे प्रॉब्लम रूट का प्रॉब्लम है, आप ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। हम मेरा जो टीम है एक्चुअली आते हैं, एक IWT और उजान बाजार एक आता है आपका गुवाहाटी पाटगांव से, आते समय ट्रैफिक स्पेशली जो मालेगांव है वहाँ पे ट्रैफिक टीम फंस जाती है। कल रात से हो रही बारिश के कारण गुवाहाटी का विभिन्न इलाका जलमग्न हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुवाहाटी के राजगढ़ इलाके में, और ये राजगढ़ का जो है मुख्य सड़क है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर घुटने तक यहाँ पर जल जमा हो गया है, और इस इलाके में एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा विभिन्न राहत एवं बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। और साथ ही बात करें गुवाहाटी के अलग अलग स्थानों की, तो यह नवीन नगर, अनिल नगर, तरुण नगर, आरजी बोरुआ रोड और चांदमारी के अलावा हाथीगांव और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और लोगों को यहाँ पर विभिन्न तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, ताकि उनकी समस्या जो है वो कम हो जाए। और यहाँ पर जो लोगों की यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनमें है कि खाद्य सामग्रियों की समस्या है, पेयजल की समस्या है, इसके साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लोग पैदल और रिक्शे के सहारे चलकर इस जो बाढ़ प्रभावित इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर है जो जल स्तर है वो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो गुवाहाटी के जीएमसी और जीएमडीए की तरफ से पानी निष्कासन का काम लगातार जारी है। यहाँ पर बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं और पंप से लगातार जो है वो पानी को भरलू नदी तक डाइवर्ट किया जा रहा है। और
इसके साथ ही है जो जल स्तर को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग का जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है अगले कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, अगर गुवाहाटी में इस तरह से जिस तरह से कल रात को बारिश हुई, अगर उस तरह से बारिश होती है तो लोगों की समस्या बढ़ सकती है। हम आपको लगातार इस तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी के विभिन्न स्थानों से हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन मानव के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। All right, so that was the ground report by our colleague Ajit Jaiswal there from the Rajgarh area. And as incessant rains threw life out of gear in region's largest city, Guwahati, heavy rain since last night has caused flash floods besides triggering landslides in parts of the city. And at least 5 people dead in nature's fury. NDRF and SDRF are pressed into service. Meanwhile, Disaster Management Minister Jogen Mohan is rushing to Guwahati to assess the entire situation. And shifting focus to a big story from Meghalaya now, is the state BJP still mulling to withdraw from the NPP-led alliance? Well, Meghalaya BJP President Ernest Mauri indicated that the state unit of the party may press upon the central leadership to consider pulling out of the coalition. When we have the State Executive Committee on the 25th of May, in the presence of Ajay Jamalji, some of the party caricatures from various districts, they have expressed their view that we should come out from the government and withdraw the support. And where from me as the state president and from the General Secretary in charge of organization, we have given a clear statement that this matter has to be taken by the central leadership. And we have already communicated them, and it is their initiative, it is their prerogative to give the direction whether we should remain with the government or we withdraw support. But sticking with the government, don't you think it will damage the prospects of the party in the elections? Let's see. We'll wait for the decision from the center. Central has already made it clear that we will stick with the party. NPP-led government. You see, this matter we'll discuss again on we have the national executive meeting in Hyderabad. So in that meeting we'll take a call because they will call for the report from Meghalaya. I'll present that report. What are the views of the MLAs? What the views? The view of both the MLA, they have to wait for the decision from center. Meanwhile, Meghalaya BJP Vice President Bernard Marak indicated that considering the alleged corruption in the GHADC and KHADC, the NPP will have to be held accountable for things at some point or the other. It's not only targeted at NPP, it's targeted at the government. And as far as NPP is concerned, I talk only about district councils. And the district councils in Karotis was run by NPP in the previous term also, now also. So all the mismanagement and the misappropriation of funds has been done under the leadership of NPP. So that's why the NPP thing comes in. But as far as state is concerned, we are not targeting the NPP or not. We are not mentioning about the NPP. But yes, Chief Minister being the NPP hat, he has to take up the responsibility to reply to all the points we have raised on corruption. As far as corruption is concerned, or the irregularities is concerned, we are doing whatever we can at our own level. Even the CAG report in the district council, it's going to have a very big impact because the governor will obviously take some decision if the district councils do not reply. So district council issues I have been raising from before. Even now I'm still raising. And now district council is in such a position that they have to reply. And if they don't reply, then obviously, hopefully, maybe governor might order CBI inquiry also, because these are all central funds. So other irregularities in the state government will be looked after by our own MLAs.
We are also raising those issues which are concerning Garovis. So in general, this one MLAs and our state president will take up the matter as far as state is concerned. And a former minister and state BJP legislator A.L. Hek dismissed speculations of division within the party in Meghalaya. It may be mentioned here that speculations are doing rounds of a possible divide between the BJP MLAs and the party's state unit. As a BJP, we are together. There's no doubt. Okay, sometime when questions come, we have to reply. Doesn't mean that we are doing individually. As a part of the party, or doesn't mean this is individual. When I talk on behalf of the party, it is a party only. So you have to accept this as the leaders. As a leader, you have to show your, acceptability. So whatever we speak, whatever Basanwar speak, whatever our president speak, he speak on behalf of the party, which is not against the party, which is for the betterment of the party and the strength of the party. What's wrong to speak on behalf of the party? Shifting focus now, the all-important two-day executive meeting of the Assam BJP began today at Difu in Karbi Anglong. The meeting, which is being held in Difu Town Hall, is being attended by top BJP leaders. It needs to be mentioned here that BJP executive meeting in Difu comes after the Saffron Party swept the Karbi Anglong Autonomous Council elections with landslide victory. As such, the winners of the Karbi Anglong Autonomous Council polls will be felicitated tomorrow in presence of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, BJP's Northeast General Secretary Ajay Jambal, Union Minister Sarbananda Sonwal and National Vice President Vaijayanta Panda, among others. Worth mentioning here that Chief Minister Sharma could not leave for Difu today owing to the inclement weather condition in Guwahati. The Chief Minister will be now heading for Difu early morning tomorrow. Meanwhile, we have reactions coming in from Kamakhya Prasad Tasa. Let's listen in. हम लोग यहाँ पर आसाम का डेवलपमेंट के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 साल में जो काम किया अंडर लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके ऊपर में एक धन्यवाद जो प्रस्ताव है उसको रखे हैं और चाहता हूँ क्या उनका नेतृत्व में भारतवर्ष में जो तरक्की हुआ, विशेषकर अंत्योदय को लेके और आदमी लोग का करप्शन का बारे में जो धारणा था उसको पूरा खत्म करके एक वेल एस्टेब्लिश गुड गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। और एक साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो काम किया वसुंधरा और एक प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो शुरू किया, इसके लिए प्रशासनिक संस्कार जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया उसके लिए हम लोग धन्यवाद दिए हैं। कल क्या एजेंडा रहेंगे, कौन कौन आने वाले हैं कल? कल तो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी आ रहे हैं। With that, we take a short break. Stay tuned for more news. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Sterling Reserve, come alive. Sir, আপোনাৰ পাৰ্সেল। ধন্যবাদ। স্যাৰ, এয়া আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত মোদীজীৰ ফটো। আমাৰ পৰিয়ালৰ হয়। কি কথা কয় স্যাৰ? আৰে চোৱা, যোনে আমাক পইচা দিলে আৰু যাৰ বাবে আমি ঘৰটো কিনিলো। চোৱা, এতিয়া এই গোটেই ঘৰটো তোমাৰ বৌয়েৰৰ নামত আছে। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িব, লিখিব, তেন্তে সিহঁতৰ ভৱিষ্যত আমাতকৈ উন্নত নহ'ব জানো? হয় স্যাৰ, আপুনি একদম শুদ্ধ কথা কৈছে। উন্নতটো হৈছেই। এতিয়া চাওকচোন, মোৰ মাৰ দৰবৰ খৰচ 1000 টকা আছিল। এতিয়াতো 300 টকাতেই হৈ যায়। সেয়া মোদীজী এতিয়া তোমাৰ পৰিয়ালৰো হৈ গ'ল। হয় স্যাৰ। आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में, बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में। आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में।
a university is much more than just a place to get your education. It not only helps you build your career, but also your personality and mindset. At Assam Royal Global University, you will get the most suitable environment to gain knowledge and also grow as a person. The university has the best infrastructure with all required facilities and best quality equipment for any kind of educational need. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Welcome back and on to Tripura now. Hectic politicking is being witnessed in state as the date for the crucial by-polls near. With stepping up the party campaign, Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee drum up support for TMC candidates for 6 Agartala and Town Bardowali seat. While launching an attack on the ruling BJP, Banerjee said that the party's days are numbered in the state and that the change in chief minister was indicative that Saffron Party is on back foot. যত দিন গেছে বিজেপি তত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে ত্রিপুরায় পরিবর্তন হবে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই আমি তো বলেছিলাম নভেম্বর মাসে যে বিপ্লব বাবু আপনার বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে কি হলো এক মাস আগে টাটা বাই বাই খেলা শেষ নৌকায় তো ফুটো ধরে গেছে এখন নৌকার চালক পাল্টাচ্ছে আরে নৌকা ডুবতে চলেছে চালক পাল্টে কি হবে আপনার কাপড় ছিঁড়ে গেছে আপনি তাপ্পি দিয়ে কদিন চালাবেন আপনি চালাতে পারবেন না এখন বিপ্লব দেবের জায়গায় নতুন বলির পাঠা কাকে করেছে ডক্টর মানিক সাহা মদটা পুরনো বোতলটা নতুন নতুন বোতলে পুরনো মদ এই হচ্ছে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের বিধান তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মাটিতে পা রেখেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়েছে পরিবর্তন করতে আর 2022-এ মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে 2023-এ সরকার পাল্টাবে আপনি লিখে রাখুন 19-এ পাল্টাওনি 20-তে পাল্টাওনি 21-এ পাল্টাওনি হঠাৎ করে 22-এ কি এত জ্বালা হলো কেননা তৃণমূল কংগ্রেস পিছনে পড়ে গেছে আর আমরা আমাদের দলটা অন্য দল থমকে চমকে লাভ নেই আর ত্রিপুরাকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে দিল্লি চালাবে না ত্রিপুরাকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ চালাবে ত্রিপুরার 40 লক্ষ মোবাইল বোনেরা চালাবে And Banerjee also said that the battle in Tripura is not between the TMC and the BJP, but the people of the state and the Saffron Party. একটা মানুষকে পুরসভা নির্বাচনে নিজেদের গণতান্ত্রিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিতে দেয়নি আপনারা ভোটে গেছেন আপনারা পোলিং স্টেশনে গেছেন আপনারা নিজের ভোট নিজে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দুয়ারে গুন্ডা মডেল আপনাদের আটকেছে এই ভোটে সাহস করে বুথে গিয়ে ভোটটা দিতে হবে এই লড়াই শুধুমাত্র তৃণমূল বনাম বিজেপি নয় এই লড়াই ত্রিপুরার মানুষ বনাম বিজেপির লড়াই আর তৃণমূল কংগ্রেস শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাদের পাশে আছে আজকে যে সংখ্যায় মানুষ আমাদের ভালোবাসা দিয়েছে আমাদের কৃতজ্ঞতা আশীর্বাদ দোয়া সমর্থনের ঋণে আবদ্ধ করেছে শুধু এরা যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে 23 তারিখ ভোটের ভোকাট্টা হয়ে যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি কিন্তু ভোট আপনাদের দিতে হবে দুয়ারে গুন্ডা মডেলের জায়গায় আগামী বছর অর্থাৎ 6 মাস 7 মাস পর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের পর যখন উন্নয়নমূলক গণতান্ত্রিক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হবে ত্রিপুরার মাটিতে সেই সরকার দুয়ারে গুন্ডা মডেল না দুয়ারে সরকার মডেল প্রতিষ্ঠা করবে ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের জন্য Meanwhile, a former Tripura Chief Minister Biplab Deb was seen campaigning for party candidates for the ensuing by-polls. Speaking exclusively to Northeast Live, Deb exuded confidence that the BJP will win all 4 seats in the by-polls. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष 130 करोड़ जनता जिस दिशा में चल रहे त्रिपुरा इसके बाहर नहीं है और त्रिपुरा के लोगों ने 2018 में सुनने से लेके सरकार बनाया
त्रिपुरा अलग राज्य है, त्रिपुरा के लोग अलग है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा के लिए जो काम किया, डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी को सामने रख के चारों विधानसभा एक नया जुआर के साथ, नया जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं त्रिपुरा के जो पवित्र वोटर है, जो दिशा निर्देश करते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार 23 तारीख जून को जो इलेक्शन होगी, उस इलेक्शन में इतिहास तैयार करके त्रिपुरा का लोग जवाब देंगे, जो कि 18 में भी दिया। On to Sikkim now. The state government today announced a temporary ban on the release of controversial Nepali film Kabaddi 4 amid outrage over slapping monk. Chief Minister Prem Singh Tamang took to social media to announce the state government's decision to impose a ban on the release of Kabaddi 4 until the dispute is resolved in an acceptable manner. This decision comes just a day after the movie producers Shushma Kurung and Anmol Kurung issued a public apology to Buddhist communities and monk associations in Sikkim. Meanwhile, reacting on the ban, the producers of movie welcomed the decision of the government. It may be mentioned here that lead actress Meruna Mangar had accused monk Purba Lama of touching her inappropriately during the crowd rush at the premiere in Nepal and in turn slapped the monk, made him hold his ears and performed a sit-up as a punishment. Besides, the actress has not publicly apologized to the monk, which has been a widespread demand of the public. स्थानीय लोक तथा संस्थाओं की भावना को सम्मान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने 17 जून को रिलीज होने वाली कबड्डी 4 जो नेपाली फिल्म है, अभी बहुत चर्चित नेपाली फिल्म है, उसको रिलीज पर प्रतिबंध लगा है सिक्किम पर। और इस फिल्म की मुख्य नायिका मेरुना मंगर और एक लामा के बीच काठमांडू में कई दिन पहले एक हाथापाई की घटना हुई थी और उस घटना को लेकर सिक्किम के बहुत सारे संगठन तथा लोगों ने इस फिल्म को सिक्किम में रिलीज करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और इस मांग को मद्देनजर रखते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने 17 जून को रिलीज होने वाली कबड्डी फिल्म की रिलीज पर राज्य में प्रतिबंध लगा है। और मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक स्टेटस के माध्यम से जानकारी दी है और उन्होंने स्टेटस में लिखा है कि जब तक इस जो विवाद है, इस विवाद का समाधान नहीं होगा, तब तक ये फिल्म सिक्किम में रिलीज नहीं होगी। Meanwhile, we have reactions from Sikkim Chief Minister P.S. Tamang on the ban on release of Kabaddi 4. Let's listen in. जो अभी आप सबको मालूम होगा कि कबड्डी 4 का जो विवाद हुआ है विभिन्न संघ संगठन के द्वारा, उसको मानते हुए हम लोग ने फिलहाल फॉर टेम्परेरी उनको हम लोग ने बैन किया है। ये परमानेंट रूप से नहीं, जब सेटल होगा उनको हम खोल देंगे। फिर सर उधर से सेटल होके आएगा तो ये क्या होगा, जो अगर संघ संगठन मानेंगे, अगर उनका होगा कि हम लोग सेटल हो गए, आप दिखा सकते हैं तो हम दिखा लेंगे, क्योंकि हम किसी भी जातीय संगठन को और कई संगठन को भावना को हम खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको सम्मान करते हैं हमने ये निर्णय लिया है। And on to some national news now. In a landmark move for India's defense forces, the centre has announced the Agnipath recruitment scheme today. Defense Minister Rajnath Singh, together with the 3 chiefs of the armed services, addressed a press conference in New Delhi and announced the details of the plan. Under this scheme, soldiers will be recruited for a tenure of 4 years so as to provide youthful profile to the armed forces. The chiefs of 3 services had briefed Prime Minister Narendra Modi 2 weeks ago about the Agnipath scheme for recruiting soldiers, which will pave the way for inducting soldiers into the security forces for a short term. The scheme is implemented by the Department of Military Affairs, and under the new Agnipath scheme, youth will join the army for a period of 4 years and serve the nation. The scheme is a part of the government's effort towards reducing the expenditure and age profile of the defense forces. The places for recruitment can also be significantly expanded. At the end of 4 years, about 80% of the soldiers will be relieved of duty and will receive assistance from the armed forces for further employment opportunities. Many corporations will also be interested in reserving jobs for trained and disciplined youth who have served their country. भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए
उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस। It has been estimated by the armed forces that thousands of crores in salary, allowances and pension can be saved if a large number of soldiers are recruited under this tour of duty concept. The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs. In a historic move, Prime Minister Narendra Modi today directed all ministries and government departments to recruit 10 lakh individuals within the next 18 months on a mission board. The decision followed after Prime Minister Narendra Modi reviewed the status of human resources across all government departments and ministries. The Prime Minister's review meeting comes more than 2 months after he suggested the secretaries of the central government to take immediate steps to fill up existing vacancies in all the ministries and respective departments. Following this, every department and ministry had prepared a list of vacancies against the sanctioned post. And we have reactions coming in from youths who are elated over Prime Minister Narendra Modi's decisive move to solve the unemployment issue and enhance the governance by filling up vacancies in all government departments. मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरा निरीक्षण करके ये फैसला लिया है कि 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी सरकार में, सरकार के अन्य अन्य विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी नई नई PLI स्कीम्स में जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जो निर्यात को तेज गति से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस सब में भी सरकारी भूमिका को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्वरूप में सोचने के लिए हमारे नए जो लोग जुड़ेंगे सरकार में, इनका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा और सरकारी कामकाज जनता के साथ जोड़ने में भी लाभ होगा। Some more national stories now. The Enforcement Directorate is interrogating Congress leader Rahul Gandhi for the second day in the National Herald case. Well, this comes after nearly 10 hours of intense grilling
by the federal agency yesterday. This indeed is a big development at this hour as massive protests had erupted in different parts of the nation, opposing Rahul Gandhi being interrogated by Enforcement Directorate. Meanwhile, Congress leader Randeep Surjewala, briefing news person, said that the ED probe against Rahul Gandhi is an attempt to muzzle his voice as he has always questioned the center on issues like Chinese intrusion, fuel price hike, unemployment, besides other. The Congress leader also termed ED's Rahul interrogation as attack on common people. ये हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कि कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए। It may be recalled here that the Enforcement Directorate's grilling of the former Congress president on Monday took place amidst the Satyagraha launched by the party workers in protest against the Enforcement Directorate's summon in the National Herald case. Gandhi arrived at the ED office in the national capital with his sister and Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra amid a huge march by the party workers along with him to the office. Various senior leaders including Randeep Surjewala, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot took part in the party's Satyagraha march. Now the incident has sparked a fresh row between the ruling BJP and the opposition Congress, in which the latter have accused the ruling party of being vindictive and misusing the federal agency. Back to region, the month-long Sagar Festival, which is one of the most important festivals celebrated in Sikkim, commenced today. On this occasion, the followers of Mahayana Buddhism commemorate the birth of Lord Buddha and his attainment of enlightenment and salvation. Meanwhile, a procession was carried out which started from a Suklakhan monastery and passed through the streets to Gangtok. The procession was accompanied by the lighting of butter lamps, carrying idols of Buddha and sacred scriptures being read out across various temples. It may be mentioned here that the festivities mostly happen across Gangtok in the form of processions, prayers, and extending arms to the needy. Well, Sagar is one of the most important and prominent Buddhist festival. The significance of this day is, on this day, Lord Buddha is supposed to have taken birth. He attained enlightenment, and it's also the day for parinirvana, that is his death. So all these three events, which is very, very important in Buddhist tradition, is celebrated today. We have, 2 days prayers on 12th and 13th. Today is the main day. So we have finished 2 days prayer.
Today we'll be taking out the holy scriptures known as Kangyur and Dengyur. Well, this is out here. We have, we celebrate Lord Buddha's Jayanti in different dates, But in Sikkim, we celebrate on this particular date, the 15th day of 4th month of lunar calendar. And shifting focus to a big story from Mizoram now, activist Ruat Felanu or P. Vanram Chuangi has reiterated that her protest against ecological damage caused due to alleged faulty dumping of debris by the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited or NHIDCL will continue till things are rectified. Meanwhile, speaking on behalf of Ruat Fela, activist Lalrin Fela said that while they are all for development, it cannot come at the cost of ecology. Lalrin Fela also alleged that despite submission of environmental reports by at least 3 DFOs, the NHIDCL is still continuing with its construction. Just us protesting every day or carrying on the protest every week or the whole month will not do much good even for us or for everybody else who needs to do their work. Whatever the protesters bring out, we are happy as of it now, but we are not fully contented yet. We want more than a so-called notice and a stay order. We want environmental restoration also. We have brought it up to the PCCF, and I'm sure he's aware of the situation that the NHIDCL does not have clearance or they have not done proper impact assessment. His reaction did surprise us. He does seem to know that the impact assessment needs to be done, but he does not seem so aggressed about it. So maybe he might have another idea about what to do about that. That I'm not sure. Justice Mizoram is a movement, not an organization, nothing else, nothing more than a movement. We are a bunch of enthusiastic youth of Mizoram who comes together due to the concern and growing apprehension towards our environmental destruction. And our intentions and objectives will be saving the ecology environment of Mizoram, and we will go as far as what it needs to be, whatever we can do in every sphere of environmental destruction within Mizoram. We will look into whatever needs to be looked on what kind of punishment needs to be given, what kind of things needed to be done further. And as a movement, we will sure look other spheres of environmental damage done to Mizoram, and we will try to help bring justice in all those environmental degradation. Is a big story from Mizoram, where activist Ruat Felanu or Vanram Chuangi has reiterated that her protest against ecological damage caused due to alleged faulty dumping of debris by the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited will continue till things are rectified. All right, we have a breaking news at this point in time, viewers. In view of heavy rainfall in Guwahati, all educational institutions in Kamrup Metro District will be closed tomorrow. However, an exception has been made for schools that are centers for any examinations. So breaking news at this point in time, viewers. In view of heavy rainfall in Guwahati, all educational institutions in Kamrup Metro District will be closed tomorrow. However, an exception has been made for schools that are centers for any examinations.
So all educational institutions in the district to be closed on June 15th, that is tomorrow, with exception of conduct of examinations in view of the rainfall alert. This is being tweeted by Kamrup Metropolitan District Administration. This is indeed a big breaking news at this point in time, viewers. All educational institutions in a Kamrup Metro District will be closed tomorrow. However, an exception has been made for schools that are centers for any examination. So any centers, any schools that are meant for centers for any of the examination, that would be remained open, that will be exempted. But in view of heavy rainfall in Guwahati, all educational institutions in Kamrup Metro District will be closed tomorrow. And however, an exception has been made for schools that are centers for any examination. And meanwhile, a situation continues to be grim in region's largest city, Guwahati, with death toll due to floods and landslides rising to 5. Incessant rains threw normal life out of gear as people in vulnerable localities were confined to their houses, and the NDRF and SDRF called in to reach out to those in need of urgent assistance. But the breaking news at this point in time, viewers, is that decision has been taken in view of heavy rains in Guwahati, and all educational institutions will remain closed tomorrow. And just exempted the schools which are meant for any examination. Those schools have been exempted, and this decision was taken in view of the heavy rainfall that has inundated the entire city. Meanwhile, dramatic visuals have come to fore of the Mercedes car that grabbed eyeballs throughout the day was stowed from waterlogged area by a crane. Take a look. So this is the dramatic visuals. This is the Mercedes car that has grabbed eyeballs throughout the day. And the Mercedes car was towed from the waterlogged area by a crane. Take a look. And well, news and updates continue on Northeast Live, so stay tuned for more news. Thank you. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.